gotta get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is never trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Oh, Feel like I'm floating through the air.
here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Rising with each beat of the music is bringing real flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. Welcome, my heart so full, I'm devoting myself to the night. There's no motive, we're just listening, we're existing. We stay where the music plays, where the lights drop low, where the people sway. So you think you might be a great project manager, but you need to enhance your skills? Then get this course on Udemy. You'll learn the tools and techniques of great project managers, and you'll be ready for certification that's truly career-changing. Get the skills, get the confidence, get this course. Get ready for 10 times the action, 10 times the celebration, and 10 times the banga. और होगा इंडिया की हर सांस में कबड्डी। तैयार हो जाओ बस, ये है BKL सीजन 10। Rising with each beat of the music is bringing real flames in the fire that keeps burning. We're inviting the night in. Welcome, my
वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे हम आपको बता रहे थे कि किया सेल्टोस नया वाला मॉडल 2023 का, इसके अंदर हमने पीपीएफ इंस्टॉल की है। अभी ये कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने गरवारे प्रीमियम 5 ईयर वारंटी वाला पीपीएफ इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। आप इसकी फिट एंड फिनिश तो वीडियो में देख ही चुके हो, किस टाइप से हमने इसका प्रोसेस किया है, कैसे हमने पहले फर्स्ट वॉश किया, फिर फोम वॉश हुआ, फिर इसके बाद सेकंड वॉश हुआ, फिर इसके अंदर जो है पीपीएफ इंस्टॉल हुआ, किस टाइप से हुआ, सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में दिखाई दी हैं। आप इसकी फिट एंड फिनिश देखिए। जो हमारे पास इसकी फिटिंग होती है, मोस्टली आपको ढूंढना पड़ेगा कि पीपीएफ हुई है या फिर इसके अंदर पीपीएफ नहीं हुई है। इतनी जबरदस्त फिट एंड फिनिश इसके अंदर हमने करी है। बहुत सुपर प्रोडक्ट है। इसके बेनिफिट्स तो जैसे हमने पहले वाली जो सेल्टोस गाड़ी में हमने करी थी वो भी आपको बता दिए थे कि इसके अंदर पीपीएफ का फायदा क्या है। पीपीएफ से आपकी गाड़ी फुल स्क्रैच प्रूफ हो जाती है, मेंटेनेंस फ्री हो जाती है। इसके अंदर आपको मेंटेनेंस का कुछ भी टेंशन नहीं रहता है। आप इसको डेली प्लेन वाटर से गाड़ी साफ कर दीजिए, आपकी गाड़ी एकदम शोरूम ब्रांड न्यू दिखेगी। साथ साथ में पीपीएफ का जो सेकंड फायदा है कि आप धूप में भी गाड़ी खड़ी रहेगी तो इसका कलर डल नहीं होगा। इसकी शाइन आपकी जो है मिनिमम 5 से 10 ईयर्स तक इसकी बरकरार रहेगी। फिर इसके अंदर बर्ड ड्रॉपिंग का भी फायदा होता है। जैसे कि कोई पेड़ के नीचे हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, उसके अंदर बर्ड्स वगैरह वो हिट कर देते हैं, तो उससे भी उसके ऊपर दाग आ जाते हैं, वो इसके अंदर आपकी गाड़ी में नहीं आएंगे। जैसे हम आउटिंग पे जाते हैं, किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पे पेड़ पौधे काफी सारे रहते हैं, जिससे कि गाड़ी में स्क्रैचेस आने लगते हैं। अगर वो गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आया आफ्टर पीपीएफ तो ऑटोमेटिक जैसे हम उसको थोड़ा हीटिंग करेंगे तो सेल्फ हीलिंग हो जाएगा। ये सब इसके बेनिफिट्स है। शाइन तो बनी ही रहती है। साथ साथ में हमने इसका डीप क्लीनिंग भी किया है। गाड़ी काफी गंदी थी जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में वीडियो में, तो उसके साथ साथ हमने इसका डीप क्लीनिंग भी किया है। डीप क्लीनिंग भी आप देखेंगे, गाड़ी एकदम पूरी फिट एंड फाइन हो चुकी है। अंदर से गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। अभी आप गाड़ी को आप अंदर से भी देख सकते हैं कि गाड़ी क्या थी और ये क्या बन चुकी है। गाड़ी बहुत डस्टी थी, इसके अंदर काफी सारा डस्ट था, लगा हुआ था, शाइन नहीं थी। गाड़ी नया होने के बाद भी ऐसी लगती बहुत पुरानी गाड़ी है। अभी आप देखेंगे एकदम आपको न्यू ब्रांड गाड़ी देखने को मिलेगी आपकी। ये काम आपने देख लिया है हमारा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स रिश्तेदार सबको सजेशन दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।